નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કરંટ ટોપિકમાં હું પીનલ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું અને કરંટ ટોપિકમાં આજે વાત કરી રહ્યા છે આજના ખાસ દિવસની. આજે છે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ. એવું કહી શકાય છે કે એવો દિવસ છે આજે કે જે યોગ દરેક વ્યક્તિના જીવનનો એક ભાગ બની ચૂક્યો છે. યોગ દિવસની શરૂઆત ખૂબ પહેલાથી થઈ ચૂકી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 27મી સપ્ટેમ્બર 2014ના રોજ યોગ દિવસ મનાવવાનું આહવાન કર્યું હતું ને ત્યારબાદ યુનેસ્કોએ 21મી જૂને વિશ્વ યોગ દિવસ તરીકેની ઉજવણીની જાહેરાત કરી છે અને ત્યારથી આજના દિવસ સુધી આપણે યોગ દિવસ મનાવતા આવ્યા છે અને એવું કહી શકાય છે કે સમગ્ર વિશ્વને યોગનું ભેટ આપનારું આપણો જ દેશ છે, એટલે કે ભારત દેશથી જ તેની શરૂઆત થઈ છે અને સમગ્ર વિશ્વમાં આજે યોગ પ્રખ્યાત બની ચૂક્યું છે અને યોગના મહત્વને સમજવાનો પ્રયાસ દરેક વ્યક્તિને કરાવવામાં આવી રહ્યો છે અને તેની સાથે જ યોગની પરિભાષા અઢળક છે. દરેક વ્યક્તિ યોગની પરિભાષાને કંઈક અલગ રીતે લે છે. યોગની જો વાત કરીએ તો યોગ એક શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક અભ્યાસ છે એવું કહી શકીએ છીએ. યોગ એક આધ્યાત્મિક શિસ્ત છે એવું પણ માની શકીએ છીએ અને એવું કહી શકાય છે કે યોગ એ શરીર અને આત્માના જોડાણનું એક પ્રતીક છે ને જ્યારે વાત ભારત દેશની હોય ત્યારે ભારત દેશમાં તો યોગ ભારત દેશની સંસ્કૃતિની સાથે જોડાયેલો છે. સંસ્કૃતિનો એક ભાગ છે યોગ. યોગથી શરીરની સ્વસ્થતા અને સ્વચ્છતા બંનેમાં સહજ રીતે વધારો થાય છે અને આજના સમયમાં સૌથી વધારે જો મહત્વની વાત કરવામાં આવે તો આજના સમયમાં જે રીતે હેક્ટિક લાઈફ થઈ ચૂકી છે એ હેક્ટિક લાઈફમાં સ્ટ્રેસ વધ્યો છે તેવા સમયમાં યોગ એક એવી રીત છે કે જેનાથી આપણા જીવનમાં યોગ કરવાથી સ્ટ્રેસ મુક્ત આપણે થઈ શકીએ છીએ, તણાવ મુક્ત આપણે થઈ શકીએ છીએ અને એવું કહી શકાય છે કે યોગ જીવનને સમસ્યા વિહીન બનાવે છે અને જિંદગીને ખરા અર્થમાં જીવંત બનાવે છે. પણ આજના સમયમાં હજી પણ કેટલા લોકો છે કે જે લોકો ખરેખર આ યોગના મહત્વને સમજે છે. પ્રયાસો ચાલુ છે અને આપણા દેશ થકી વારંવાર સમગ્ર વિશ્વમાં યોગના મહત્વને સમજાવવાનો પ્રયાસ થતો હોય છે. ત્યારે ફરી એક વખત કરંટ ટોપિકમાં આપણે આ પ્રયાસ કરી રહ્યા છે યોગની સાથે, મેડિટેશનની સાથે જોડાયેલા એવા કોચ અને ટીચર્સની પાસેથી આજે જાણીશું યોગના મહત્વને સાથે જ લોકોને સમજાવવાનો કરીશું પ્રયાસ. તો મારી સાથે અત્યારે આ કાર્યક્રમમાં જોડાઈ ગયા છે અનુરાગ મહેતા, જેઓ મેડિટેશન કોચ છે, પ્રેરણા નાગદા જેઓ યોગ ટીચર છે, મિનલ ચોકસી તેઓ પણ યોગ ટીચર છે. આપ ત્રણેયનું સ્વાગત છે. વેલકમ ટુ કરંટ ટોપિક. તો મિનલજી, સૌથી પહેલા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ કે જેની ઉજવણી 2014થી જેની શરૂઆત કરવામાં આવી છે ને ખાસ કરીને આપની મતે આ દિવસનું મહત્વ અને સાથે જ યોગનું મહત્વ. એકચ્યુઅલી 21 જૂન એટલે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે લોંગેસ્ટ ડે ઓફ ધ યર. સૌથી મહત્તમ ફાયદો થાય શરીરને એના માટે એને યોગ દિવસ તરીકે સેલિબ્રેટ કરવામાં આવે છે. શારીરિક, માનસિક, ઇમોશનલ લેવલ અને સ્પિરિચ્યુઅલ લેવલ યોગ બધા સ્તર ઉપર કામ કરે છે. એટલે યોગ એટલે આમ કહેવાય કે જોડાણ. સંસ્કૃતમાં યોગ યુજ ધાતુથી બનેલું છે. યોગ એટલે આમ જોડાણ. તો એ મનને, શરીરને, ઇમોશન્સને અને આપણા આત્માને બધાને જોડે છે. બધાની હેલ્થ નું ધ્યાન રાખે છે. એક યોગ એક જ વસ્તુ એવી છે કે બ્રીથ સાથે તમે કોઈ બી મુવમેન્ટ કરો છો, આસન કરો છો, પ્રાણાયામ કરો છો, તમારા શ્વાસ ઉપર તમારું કોન્સ્ટન્ટ ધ્યાન છે. આપણે અહીંયા જયારે જન્મ લઈએ છીએ ત્યારે શ્વાસ લઈને આવીએ છીએ. શ્વાસ ઉપર જેટલા ઓછા શ્વાસ એટલું વધારે આયુષ્ય. જેમ કાચબો અને કૂતરું બે જોઈએ તો કાચબો વધારે દીર્ઘાયુ જીવે છે બીકોઝ એ ઓછા બ્રીથ લેતું હોય છે. કૂતરું જે છે એ વધારે બ્રીથ લે છે એટલે એ ઓછું જીવે છે. તો એવી જ રીતે આપણે પણ જેટલું આપણું બ્રીથિંગને આપણે જેટલું વધારે ધ્યાનપૂર્વક ખર્ચીશું એટલું આપણું આયુષ્ય વધશે અને હેલ્ધી જીવીશું. યોગ એક જ વસ્તુ એવી છે કે જે આપણને શ્વાસ સાથેનું વર્કઆઉટ કહી શકો એ રીતનું એક પૂરું પાડે છે. સો એ રીતે યોગનું બહુ જ મહત્વ છે. જી, બસ આ જ વાત લોકો સુધી પહોंचाड़વાનો આપણે प्रयास કરી રહ્યા છીએ. प्रेरणाजी, अकॉर्डिंग टू यू योग क्या है, योग का क्या महत्व है? मेरे हिसाब से योग जो है आजकल जो लोग हैं वो समझते हैं कि सिर्फ योगासन करना ही योग है। सिर्फ आसन में अगर आपने आसन बहुत अच्छे कर लिए तो वही एक योगा हो गया। तो आजकल के लोगों में इतनी जागरूकता नहीं है, वो सिर्फ देखते हैं कि हाँ ये भाई अच्छा आसन कर रहा है तो इसको बहुत अच्छा योगा आता है। तो योगा यही नहीं है, योगा इससे भी ज्यादा, योगा इससे भी बियॉन्ड है। योगा में जो अष्टांग योग है हमारे, उसके 8 स्टेप है
8 स्टेप में से जो 3rd नंबर का जो स्टेप होता है आसन, वो योगासन जो लोग आजकल समझ रहे कि वही योगासन है, जबकि अष्टांग के 8 स्टेप हैं। उन 8 स्टेप में से जो अंत तक जाता है, जो समाधि तक जाता है और उससे परे चला जाता है, वही योग है। वही जब हम पहुंचते हैं तो हमारी आत्मा का हमारे परमात्मा से मिलन होता है और वही योगा होता है। तो कहीं ना कहीं ये योग विषय जो है वो बहुत ही समग्र विषय है, एक विशाल विषय है। इसको सिर्फ एक योगासन से आप बता नहीं सकते, एक योगासन ही इसका वर्णन नहीं कर सकता। इससे भी ज्यादा जो है वो योगा है। तो मेरे हिसाब से जो योगा डे है, जो योग दिवस है, वो इसीलिए मनाया जाता है कि ताकि लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस हो, लोग जाने कि भाई योगा जो है वो इससे भी ज्यादा है, एक बहुत बड़ा विषय है, एक समग्र विशाल समुद्र है। जी, 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 बिल्कुल इसीलिए ही योगा को सिर्फ और सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक ही और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा महत्व की बात है कि सबसे ज़्यादा योगा को आध्यात्मिक की तरह से यहाँ पे तीनों चीज़ों का मिलन होता है, यानी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक मिलन योगा में होता है, तभी भारत देश में इसका ज़्यादा महत्व है। अनुराग जी, जब बात मेडिटेशन की आती है, ध्यान की आती है, योगा को उसके साथ अगर हम कनेक्ट करें तो जैसे कि आसन से हमारे शरीर में काफी फायदे होते हैं, उसी के साथ मेडिटेशन भी उसी का भाग है और आज के समय में वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी, बिल्कुल सही है और आई थिंक जो मुझे कहना था वो प्रेरणा जी ने थोड़ा-सा उसमें से कह ही दिया है, बात सही है। महर्षि पतंजलि के जो अष्टांग योग हैं, उसके अंदर जो लास्ट के 3 अगर पकड़े हम लोग, तो धारण, ध्यान और समाधि, ये तीनों जो है एक लेवल पर कंसंट्रेशन की बात है। समाधि तो ऐसा है कि आप अलग ही दुनिया में चले गए, उसको गोल भी नहीं बना सकते, गोल बनाने से वो आने वाला भी नहीं। हम बात करते हैं मेडिटेशन की, तो मेडिटेशन जो है उसके ऊपर कई सारी धारणाएँ हैं कि मुझसे मेडिटेशन होता नहीं है, मैं कैसे करूँ? मैंने ट्राई भी किया है, मेरे थॉट्स रुकते नहीं हैं या करने से कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ है, ऐसा भी कई बार बोलते हैं लोग। तो मेडिटेशन एज़ अ मेडिटेशन कोर्स एंड डूइंग माय पीएचडी ऑन मेडिटेशन राइट नाउ, इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि मेडिटेशन के ऊपर ग्लोबल लेवल पे इतना रिसर्च है जो बोल रहा है कि फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल पर बहुत सारी बेनिफिट्स जो है मेडिटेशन देता है। कैसे कर सकते हैं मेडिटेशन वो मैं कराता हूँ। ऑन द गो मेडिटेशन, हम चलते फिरते अभी बात करते हुए मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं, मेरा एक प्रयास है कि वो एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाए जो महर्षि जी के पतंजलि जी के अष्टांग योग के अंदर ही अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वो चीज वहां पे आई जाएगी। जैसे हम आसन करते हैं तो हम आसन करते हैं तो थोड़ी देर रुकते हैं, ध्यान देते हैं कि कहाँ बॉडी में क्या चेंज आ रहा है। प्राणायाम तो पूरा ही ध्यान है और लास्ट में तो प्रॉपर विधि है ध्यान। तो इसका सीक्वेंस जो है वो समझाना लोगों को बहुत जरूरी है। જી 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 મિનલજી, હવે અહીંયા આપણે એમ તો યોગના ફાયદાઓ કે જે કદાચ હવે મને નથી લાગતું કે હવે આપણા દેશમાં એને એટલું સમજાવવાની ક્યાંક જરૂરિયાત છે. ઘણા લોકોને હવે ખ્યાલ છે કે યોગથી કેટલા ફાયદાઓ થાય છે, પરંતુ છતાં પણ આજના દિવસે અમુક એવા ફાયદાઓ લોકોને જણાવવાનો પ્રયાસ કરીશું કે જેનાથી કદાચ લોકો હજી પણ અજાણ છે. જી મિનલજી, યોગ કરવાથી અને સાથે જ આપણા જીવનમાં અત્યારના સમય છે ને એટલું હેક્ટિક લાઈફ લોકો જીવે છે ને કે લોકોને યોગ કરવા માટે કે થોડો સમય પણ યોગને આપવા માટેનો સમય નથી હોતો. એવા લોકોને આપણે સમજાવવાનો પ્રયાસ કરવો છે કે યોગથી કેટલો ફાયદો થાય છે. યુઝ્યુઅલી આપણે એવું જોતા હોઈએ છે કે રોગ થાય ને એટલે યોગ શરૂ કરે છે. એકચ્યુઅલી એવું છે કે યોગ એ આપણા બેઝ ઉપર કામ કરે છે, આપણા રૂટ પર કામ કરે છે, એટલે જડ મૂળથી રોગને મટાવે છે, એને થવા જ નથી દેતું. કેટલા બધા ડિઝીઝ એવા છે, થાઇરોઇડ છે, ડાયાબિટીસ છે, જે આપણી લાઇફસ્ટાઇલ ડિસઓર્ડર થી થયેલું છે. ઘણું બધું બેકએક છે, ની પેન છે, એ બધા આપણા પોસ્ચર ખરાબ હોવાના કારણે. અત્યારે ગેજેટના જમાનામાં બધાના આ રીતના પોસ્ચર્સ થઈ ગયા છે. એ જ્યારે એમનું પોસ્ચર બરાબર નથી હોતા ત્યારે બેકનો દુખાવો, નીનો દુખાવો, આ બધા દુખાવા એમના લાઇફસ્ટાઇલના હિસાબે અને પોસ્ચર્સના હિસાબે પોણા ભાગના રોગ એના કારણે થાય છે. બાકીના રોગ માનસિક લેવલ પર થાય છે. યોગા એક જ વસ્તુ એવી છે કે જે શરીરને તો કસરત આપે જ છે, પણ સાથે સાથે મનને બાંધે છે. તમે આસનમાં હો ત્યારે હોલ્ડ કરો છો, તમારા મનને બાંધો છો કે મારે આટલા કાઉન્ટ્સ આ સ્થિતિમાં, ભલે પેઇન છે મારે રહેવાનું જ છે, ભલે મને થોડુંક ડિસ્કમ્ફર્ટ છે મને રહેવાનું છે. 5, 7, 10 કાઉન્ટ પછી એ જ સ્થિતિમાં તમને એકદમ કમ્ફર્ટેબલ લાગવા માંડે છે. કેમ? કારણ કે તમે એ મનને બાંધી દીધું છે, તમારા મનને પ્રિપેર કરી લીધું છે. તો એ રીતે યોગા મને લાગે છે કે મનના લેવલ પર, શરીરના લેવલ પર
બહુ જ જબરજસ્ત કામ કરે છે, જે બીજું કોઈ ટાઈપનું વર્કઆઉટ કરી નથી શકતું. તમે મનને ક્યાંય બાંધી નથી શકતા કે આટલા વખત સુધી મારે હોલ્ડ કરવાનું છે અને મારે શ્વાસને પણ આ રીતે ધ્યાન રાખીને લેવાનો છે, છોડવાનો છે. બધું એક સાથે અવેરનેસ આવે છે એટલે તમે પૂરેપૂરા કનેક્ટેડ ફીલ કરો છો. जी 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 जी, આ ખૂબ જ મહત્વની વાત છે અહીંયા प्रेरणा जी। यहाँ पर योग की जब बात की जाए तो काफी सारे लोग योग की इंपॉर्टेंस को समझते हुए भी योग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि योग बहुत समय मांग लेता है और आज के समय में, आज के टाइम पे सबको सब कुछ बहुत ही जल्दी चाहिए। और योग की जब बात हो या फिर किसी रोग से छुटकारे के लिए भी योग का सजेशन दिया जाता है, या फिर मोटापा कम करने की बात हो या किसी बीमारी को दूर करने की बात है, तो योग के बारे में ये कहा जाता है कि योग अगर करना है तो होगा जरूर और जड़ से खत्म होगा, लेकिन बहुत ही समय लग जाएगा और वो समय ही आज लोगों के पास नहीं है। कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा तो लोग इस वजह से योग के साथ नहीं जुड़ पाते हैं और इसी के साथ फ्लेक्सिबिलिटी वो लोगों में जल्दी नहीं आ पाती है, सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो छोड़ देते हैं। ये एक प्रॉब्लम रहती है योग में। प्रेरणा जी। जी सही कहा पिनल जी आपने। ये प्रॉब्लम मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ भी रहता ही है। और इसी चक्कर में वो लोग क्या करते हैं कि मैं नहीं बोल रही हूँ कि जिम बुरा है या फिर योग बहुत अच्छा है, हम लोग यहाँ पे किसी का वो नहीं कर रहे हैं, बट लोग क्या करते हैं कि बहुत जल्दी रिजल्ट पाने के लिए वो जिम चले जाते हैं। वहां जी पे एग्जैक्टली। आपका 22 किलो कम हो गया, किसी का 24 किलो कम हो गया, सब हो जाता है। लेकिन वो जो वेट आप लोग कम करते हैं, वो वेट जो है वो आपका वापस जितना जल्दी गया है वो वापस उतनी ही जल्दी आ जाएगा। ओके। और जो योगा है, योगा में क्या है, दिखावापन नहीं है, बनावटीपन नहीं है। योगा में आप देखोगे लोग भले ही बाहर से अगर आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो फिट नहीं है, लेकिन उसका हर एक ऑर्गन जो होगा, उसका हर एक शरीर का, बॉडी का जो ऑर्गन होगा वो फिट जरूर होगा। हम कॉन्फिडेंस से योगा जो है, योगा स्टूडेंट बोल सकते हैं कि हमारा हार्ट फिट है, हमारे लंग्स अच्छे हैं। अगर आप किसी जिम में जाएंगे तो आप थोड़ा सा उनको देखना, अगर वो थोड़ा सा भी कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर लेंगे तो उनकी हार्ट बीट जो होगी वो बहुत जल्दी बढ़ जाएगी, या उनका हार्ट जो होगा वो इतना पंप नहीं हो पाता होगा। तो योगा में थोड़ा सा है कि हाँ थोड़ा टाइम है, लेकिन वो टाइम जो है, वो समय जो है वो बहुत लाइफ टाइम आपको रिजल्ट देगा। उसका जी जो जी रिजल्ट है वो आपके साथ बहुत लंबे समय तक रहेगा। जी, अगर टाइम लगता है तो लंबे समय तक साथ भी रहता है उसका रिजल्ट। ये सभी सब एक्सरसाइज अपनी जगह पर है, जिम भी अपनी जगह पर, एक्सरसाइज भी अपनी जगह पर है, लेकिन योग का अपना एक अलग ही महत्व है। अनुराग जी, अब यहाँ पर अगर हम बात करें स्ट्रेस दूर करने की, जो आज के समय में बहुत ही जरूरी है, उसके लिए आज के दिन पे लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे? कितनी जल्दी कैसे वो कंसंट्रेट कर सकते हैं, कैसे मेडिटेशन किया जा सकता है, कितना समय देना जरूरी है जिससे कि कोई भी व्यक्ति आज के समय पर वर्क प्लेस हो या फिर घर में भी कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही हो तो भी हेल्दी रह सके। आई मीन यहाँ पर मेंटली अगर हम हेल्दी रहने की बात करें तो। अनुराग जी। देखिए, मेडिटेशन को नॉर्मली हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो जो हम ट्रेडिशनल मेडिटेशन समझते हैं, या वैसे एक आसन में बैठे हैं, इस तरह से हाथ हैं या मंत्र हैं, जप है, कोई यंत्र है सामने, वो एक पर्टिकुलर तरीके का मेडिटेशन है, वो करना चाहिए। अगर शुरुआत में किसी से ना हो तो इट इज एब्सोल्युटली एडवाइजेबल कि गाइडेड मेडिटेशन किया जाए, चाहे वो सदगुरु का हो, चाहे वो रविशंकर जी का हो, चाहे वो ब्रह्म कुमारी का हो, या अपने किसी पर्सनल कोई जान पहचान का कोई वीडियो हो, अगर वो भी मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छा है, पर वो गाइडेड ही होगा, नहीं तो माइंड यहाँ वहाँ घूमता रहेगा। तो एडवाइजेबल यही है कि आप उसे करें, नहीं तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पिछले मतलब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, उससे उसके उसी वीक से लेकर आज तक में कई लोगों को, मतलब आप समझिए शायद 1000 से ऊपर तो लोग होंगे जिनको मैं मेडिटेशन करा चुका हूँ। एंड देयर आर जी सो मेनी पीपल हु कम एंड टेल मी दैट स्ट्रेस जो है फर्स्ट मेडिटेशन में उनका कम हुआ है। देयर आर सो मेनी पीपल जिनकी पहली बार में आंखों में आंसू आ जाते हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशनल रिलीज दैट हैपेंस। एंड कई और चीजें हैं, जैसे कोई हार्ट के इश्यूज हैं, वो बोल रहे कम हो गया, उन दिनों इंसोम्निया के इशू थे वो कम हो गए। कितने और पर्सनल लेवल पे, रिलेशनशिप लेवल पर पीपल हैव रिपोर्टेड मी दैट दे हैव डन वेल बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। सो फायदे तो बहुत हैं। तो बात अगर हम स्ट्रेस की कर रहे हैं, स्ट्रेस एट द वर्कप्लेस की कर रहे हैं, तो मेरा पीएचडी भी वही टॉपिक पे है, इम्पैक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस इन दी वर्कप्लेस कॉन्टेक्स्ट। कितना जी स्ट्रेस है, पैसा कमाने के लिए इतना स्ट्रेस है, इतना हम लोग तनाव में रहते हैं वर्क प्लेस प्रेशर को लेके, तो वहां पर ये जरूरी है कि हम मेडिटेशन को हिस्सा बनाएं। पर मेडिटेशन तो होता ही नहीं है, आजकल हैबिट्स ऐसी हो गई हैं। तो एक प्रोसेस जो मैंने डेवलप किया है उसको मैं बोलता हूँ ऑन द गो मेडिटेशन।
उसको मैं अभी 1 मिनट में ही बता दूंगा ताकि हर कोई इस चीज को आराम से कर पाएगा। जी। आप सांस पे ध्यान दीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर आ रहा है, कॉन्शियसली सांस लिया और उसके बाद ये देखा कि सांस मेरे नॉस्ट्रिल्स पे टच कर रहा है, नॉस्ट्रिल्स पे अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए। ये ध्यान है और यही ध्यान मेडिटेशन है। आपका प्रेजेंट मोमेंट में अवेयरनेस लेके आना इज द पर्पस ऑफ मेडिटेशन। अपने कॉन्टेक्स्ट, जो अर्बन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अगर मैं मेडिटेशन, कई बार मैं वर्कप्लेस में कैसा करवाता हूँ, मैं बोलता हूँ पेन लो और पेपर लो, आप कुछ लिखो। आप लिख रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन आपका पूरा ध्यान आपकी सांस पे रहना चाहिए। तो क्या हो गया, आपने विदिन 5 सेकेंड 10 सेकेंड से एक मेडिटेशन कर लिया। अब अगर आपने ऐसा मेडिटेशन बार बार कर लिया दिन में, तो माइंड पास्ट और फ्यूचर में घूमता रहता है, आपने उसको भागने ही नहीं दिया, आपने उसको वो रनवे पे स्पीड ही नहीं पकड़ने दी ताकि वो टेक ऑफ कर सके। आपने माइंड का पैटर्न तोड़ दिया। तो मैं ये बोलता हूँ, जब भी मोबाइल में नोटिफिकेशन बजे, पहले फोन उठाने से पहले एक बार एक सांस ध्यान दिया, ध्यान से पूरा सांस लिया, सांस छोड़ा। कितना भी करेंगे तो ऑन द गो मेडिटेशन है। और एक छोटा एग्जांपल, जैसे पानी है, तो मैं पानी पी रहा हूँ तो मैं पानी को देख रहा हूँ, सिप पिया, पूरा अंदर ध्यान से एक सिप। ऐसे ही भोजन किया तो एक निवाला, पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर मैं करूं और मैं कुछ नहीं करूं दिन में 5, 10, 15 बार, तो आई विल सी इन अ फ्यू डेज द इम्पैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मेडिटेशन ऑन माय माइंड, ऑन माय स्ट्रेस। एंड ये मैं बात कर रहा मतलब हूँ, काम करने के साथ साथ जिन लोगों के पास समय नहीं है वो लोग अपनी वर्क ड्यूरेशन में ही इतनी चीजें कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक आपने लोगों को यहाँ पर सांस तो दी ले है। रहे हैं ना हम लोग, जब तक हम जीवित है सांस तो ले ही रहे हैं, तो सांस को जी कॉन्शियसली लेना है और कुछ भी नहीं। दैट इज मेडिटेशन, दैट इज ध्यान। જી મિનલ હવે અહીંયા છે ને આપણે જ્યારે યોગના ફાયદાઓની વાત કરવામાં આવે ત્યારે આપણે ઘણી વખત એવું જોતા હોઈએ છીએ કે એક એજ્યુકેશન યોગમાં જરૂરી હોય। હવે એ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ યોગા એજ્યુકેશન, કે કઈ રીતે કરવું, અનુલોમ વિલોમ હોય કે પછી કપાલભાતિ હોય, એવા ઘણા અલગ અલગ યોગના આસન હોય છે કે જેના વિશે લોકોને એટલી જાણકારી નથી હોતી કે એકચ્યુઅલી પરફેક્ટલી કઈ રીતે કરવું, અને ઘણી વખત લોકો ખોટા આસન પણ કરતા હોય છે। તો એ કેટલું જરૂરી છે કે આપણે પરફેક્ટ કરીએ અને એ શીખવું, એટલે કે આને કદાચ યોગનું શિક્ષણ કહી શકાય કે જે હવે ખૂબ જ મહત્વનું બની ગયું છે, કે જેના વિશે લોકોને એટલી જાણકારી નથી હોતી મિનલબેન અત્યારે, ને એટલા માટે પણ લોકો ખોટા આસન કરતા હોય, ન થતું હોય અને પછી કંટાળીને યોગને છોડી પણ દેતા હોય છે। મિનલજી, તમે એકદમ સાચી વાત કહી, કારણ કે જ્યારે અંડર સુપરવિઝન કોઈ આસનો નથી કરવામાં આવતું ત્યારે એ લોકો ઇન્જરી કરી લે છે અને પછી એવું કહે છે કે યોગાથી મને ઇન્જરી થઈ। યોગાથી નહીં, ખોટી રીતે કરવાથી થઈ છે। તમે એ જ વસ્તુ પ્રોપર શીખ્યા પછી તમે કરો તો એ વસ્તુ ક્યારેય જિંદગીમાં ક્યારેય તમને ઇન્જરીનો કોઈ ચાન્સ જ નથી હોતો। યોગાની કોઈ પણ આસનમાં તમે જે રીતે જાઓ એ રીતે જ પાછા આવો, જે રીતે મસલને સ્ટ્રેચ કરો એ રીતે જ રિલેક્સ કરો। એક પદ્ધતિ હોય છે, એ પદ્ધતિ તમારા બોડીના અલાઇનમેન્ટ, તમારા દરેક મસલને એન્ગેજ કરતા કરતા જો તમે કરો। એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું, આપણે અનુલોમ વિલોમ કરે તો ઘણી બધી વખત મેં જોયેલું છે કે આ રીતે બંધ કરી નાક અને જોરથી કરે છે, શ્વાસ જોરથી લે છે। કોઈ પણ પ્રાણાયામ કે ક્યાંય પણ આપણા શાસ્ત્રોમાં કોઈ પણ પ્રાણાયામને સ્ટ્રેસફુલી તમને જ્યાં શ્રમ પડે એ રીતે કરવાની મનાઈ કરેલી છે। દરેક પ્રાણાયામ તમારા શરીરની કેપેસિટી પ્રમાણે કરવાનું હોય છે। હવે આ રીતે જોરથી શ્વાસ લેવાથી તમારા હાર્ટને તો કામ વધારે કરવું પડે છે। સો એ બધી વસ્તુઓ જ્યારે ઇગ્નોર કરવામાં આવે છે ત્યારે યોગના ગેરફાયદા લોકોને મળે છે। યોગથી થોડુંક નુકસાન જે થાય છે એ ખોટી પદ્ધતિથી કરવાથી થાય છે। ઘણા એવું માને છે કે મારાથી નીચે પલાઠી વાળીને નથી બેસાતું તો મારા માટે યોગ છે જ નહીં। યોગા બધા માટે છે। સિનિયર સિટીઝન્સની હું 2 વર્ષથી બેચ ચલાવું છું, એ લોકો ચેર પર બેસીને દરેક શીર્ષાસન અને હલાસન સિવાયના દરેક આસનો એ લોકો કરી શકે છે। દરેક આસનો ચેર ઉપર અને બેડ ઉપર એ લોકો કરે છે। એવું છે કિડ્સ યોગા નાનામાં નાનું 4 વર્ષથી જો તમે શરૂ કરો, આપણે એમ કહે છે કે 7 વર્ષ પહેલા ન કરાવવું જોઈએ। તમે જુઓ ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં કે અહીંયા આગળ બી હવે જિમ્નાસ્ટિકનો કોન્સેપ્ટ ચાલુ થયો છે, ઇટ ઇઝ સિમિલર ટુ યોગા। એ 4 વર્ષના છોકરાઓને પણ એ રીતે ટ્રેન કરે છે। ઇન્ટેન્સિટી બધાની અલગ અલગ હોય, એજ પ્રમાણે અલગ અલગ હોય। જેમ સિનિયર સિટીઝનને અલગ કરાવવાની પદ્ધતિ હોય, બાળકોને કરાવવાની પદ્ધતિ અલગ હોય અને નોર્મલ યંગસ્ટર્સને કરાવવાની પદ્ધતિ અલગ હોય। એટલે અંડર સુપરવિઝન યોગા થવા બહુ જ જરૂરી છે।
જે મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ અત્યારે બધા ઇગ્નોર કરે છે, ગાર્ડનમાં જઈ અને જાતે કોઈકનું જોઈ અને વિડીયો યુટ્યુબ પર જોઈ અને કરતા હોય છે. હું યુટ્યુબ પર ચલાવું ક્લાસ, હું તમને કહું કે તમે તમારા પગને માથાની પાછળ લઈ જાઓ. હવે તમારી બેગ સ્ટ્રોંગ નથી અને તમે લેવા ગયા અને ઇન્જરી થઈ તો કોણ જવાબદાર? મને અહીંયા બેઠા ખબર નથી કે તમારી બેગ કેટલી સ્ટ્રોંગ છે, કેટલી ફ્લેક્સિબલ છે. એટલે આ ઓફિસ સામસામે બોડી જોઈને જ કરવાની વસ્તુ. જી, એટલે અંડર સુપરવિઝન જ યોગા કરવું જોઈએ, ખૂબ જ જરૂરી છે એવું કહી શકાય છે અત્યારે. પણ એ પણ છે કે હવે એટલા શીખવાડવાળા લોકો પણ હોવા જોઈએ અને એટલો સમય પણ હોવો જોઈએ, ત્યાં જઈને લોકો अटकी जाए। प्रेरणा जी, यहाँ पे योग प्राणायाम हम दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, इन दोनों को अलग अलग कैसे देख सकते हैं? प्राणायाम क्या है, योग का तो हमने, योग की बात तो हम कर ही रहे हैं, बट योग और प्राणायाम दोनों शब्दों को हमेशा साथ में बोला जाता है। प्राणायाम अगर उसे समझने का प्रयास करें तो वो क्या है? प्राणायाम जो है और योग जो है वो दोनों अलग हैं। प्राणायाम जो है वो है प्राण प्लस आयाम, यानी आपके प्राणों का आयाम, आपके प्राणों की गति। जब हम प्राणायाम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो प्राण की जो गति होती है उस पे हमको फोकस करना होता है। आजकल हम लोग जो लोग प्राणायाम करते हैं बहुत गलत तरीके से भी प्राणायाम करते हैं। तो प्राणायाम जो है वो क्या होता है कि आप जब प्राणायाम करते हैं तो आप वाइटल एनर्जी भी अपने अंदर ले रहे होते हैं, प्राण ऊर्जा भी आप अंदर ले रहे होते हैं और आप ऑक्सीजन भी अंदर ले रहे होते हैं। जब आप प्राणायाम करते हैं, जब आप श्वास लेते हैं, आप इनहेल करेंगे तो आप एक वाइटल एनर्जी और ऑक्सीजन दोनों को साथ में लेंगे, तो वो वाइटल एनर्जी जो होगी वो आपको एक्स्ट्रा काम करने में हेल्प करती है, आपको एक्स्ट्रा जो है वो आपका आयुष बढ़ाने में, आपकी आयु बढ़ाने में हेल्प करती है। आजकल लोग जो है वो प्राणायाम भी बहुत कुछ लोग गलत तरीके से करते हैं। लोग प्राणायाम करने की भी बहुत एक अलग से हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारे बहुत सारे पुरानी बुक्स हैं, पुराने जो शास्त्र हैं, उसमें बहुत अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया गया है कि आपको कैसे प्राणायाम करना चाहिए। आजकल हम जो है प्राणायाम जो है वो हमारा पूरा जो बेली है, जो हमारा स्टमक है, हम उसका यूज नहीं करते हैं। जैसा कि मिनल जी ने भी बताया कि लोग जो है हम जो है वो आजकल एक कुत्ता जो ब्रीदिंग करता है उसके अकॉर्डिंग जो है, अगर हम ब्रीदिंग करेंगे तो हम कम हमारा जीवन होगा, और हम एक कछुए की तरह ब्रीदिंग करेंगे तो हमारा जो आयुष होगा वो लंबा होगा। तो प्राणायाम में यही है कि आप जो सांस लेते हैं वो आप अपने स्टमक से लीजिए, पेट से आप सांस लीजिए और पेट का ही पूरा उपयोग करिए और उसी से आप जो है वो सांस को बाहर निकालिए। तो प्राणायाम और योग जो है वो दोनों, योगासन और प्राणायाम दोनों जो है वो अलग अलग हैं, अपनी अपनी जगह पे दोनों सही है। जी, शायद ये बात भी काफी कम लोगों को पता होगी। योग और प्राणायाम दोनों शब्दों को हमेशा साथ में बोला जाता है। इतना नॉलेज भी योग को लेके अभी नहीं है लोगों में। अनुराग जी, अब समय हमारे पास कम है, लेकिन अंत में योग का इम्पोर्टेंस आपके अकॉर्डिंग और लोगों को योग के लिए हम ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सके, मतलब दिन के 24 घंटे में कुछ भी करके कितने से कितना, मतलब कम से कम कितना समय हम मेडिटेशन को दे सकते हैं जिससे कि हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं? क्या कहेंगे अंत में? देखिए, मैं छोटी सी बात इसमें ये करूंगा कि भगवत गीता में तत्व ज्ञान को भगवान कृष्ण ने बहुत फोकस किया। तत्व ज्ञान क्या है? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब ये इतना सिंपल है, पर इतनी सिंपल सी चीज को लोगों को लगता है कुछ बड़ा ज्ञान होना चाहिए, कुछ किताबें होनी चाहिए, तब जाके कुछ ऑथेंटिक होगा। ये इतनी सी बात क्या है? वैसा ही मेडिटेशन है। मेडिटेशन में मैं आपको बता रहा हूँ कि ध्यान, जिसको हम ध्यान बोलते हैं, तो जो मैं चीजें आपको बताई अभी, वो दिन भर कर सकते हैं। अगर आप सुबह 15-20 मिनट का मेडिटेशन का समय निकालें तो उससे बढ़िया कुछ नहीं। पर आपने सुबह मेडिटेशन किया लेकिन पूरा दिन जो है मन घूमता रहेगा, तो उसके बजाय अगर हम हर वक्त अगर थोड़ी थोड़ी देर में मन को पकड़ लें। जी, जैसा कि अभी आपने बताया ड्यूरिंग वर्क हम ऐसा कर सकते हैं। मीनल जी, वन लाइनर मैसेज फ्रॉम यू। योग करो, स्वस्थ रहो। मैं तो यही बोलूंगी, आई विल ऑलवेज प्रमोट योगा, बिकॉज मैं खुद इतने बेनिफिट ले चुकी हूँ उससे और बहुत सारे लोगों को मेरे स्टूडियो में मैंने दिए हुए बेनिफिट्स। सालों से लेते हुए मेडिसिन मैं बंद करवाए हैं डॉक्टर्स ने। જી જી, ચોક્કસથી એટલે સ્વસ્થ રહેવા માટે યોગા ચોક્કસપણે કરવું જોઈએ। પ્રેરણાજી, आपकी ओर से क्या मैसेज जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा लोग योग के लिए, योग की तरफ जुड़ पाए? मेरा भी मिनल जी वाला ही मैसेज है सेम, योग करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।
जी जी जरूर से। और बस यही स्वस्थ रहने के लिए, मस्त रहने के लिए योग कितना जरूरी है ये जानने का प्रयास आप लोगों से किया है। आप सभी हमारे साथ जुड़े और हमारे सारे दर्शक मित्रों को योग के प्रति योग्य मार्गदर्शन दिया, इसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ा बदल। थैंक यू। તો દર્શક મિત્રો, કરંટ ટોપિકમાં આજે વાત કરી છે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની, યોગના મહત્વને સમજવાનો પ્રયાસ કર્યો છે અને સાથે જ આપણે જણાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે કે યોગની સાથે એક એજ્યુકેશન જોડાયેલું છે, યોગનું શિક્ષણ ખૂબ જ જરૂરી છે અને તેની સાથે યોગ માટે સમય આપવું ખૂબ જ જરૂરી છે જો સ્વસ્થ રહેવું હોય। અને સાથે જ જે પ્રકારે આપણી સાથે જે ગેસ્ટ જોડાયા હતા તેમણે કહ્યું છે કે સ્વસ્થ અને મસ્ત રહેવું હોય તો યોગ કઈ રીતે અને કેટલા સમય માટે કરવું જરૂરી છે તેના વિશે આજે આપને જણાવવાનો એક પ્રયાસ કર્યો છે। અત્યારે આ કાર્યક્રમમાં બસ આટલું જ। ફરીથી મળીશું એક નવા વિષયની સાથે, ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર।